स्टार्ट करेंगे फिर क्या बोलते हैं, जान दो उनको फिर आन दो लो लो। हाँ जी हाँ, स्टार्ट कर दीजिए। जी हाँ। so we are going to discuss today unit number 1, that is called partial differentiation. We can start our discussion with this basic knowledge of z value. Here we are going to talk about more than, okay, z is a function and you should know these terminologies. P value, we are using this so many times here. Okay, it means P value means we are going to differentiate this value of z partially with respect to x. This is also called dou z by dou x. And Q value, differentiation of this value of z with respect to y. Then after P, Q, we have R value. This is R means we have to differentiate this function value dou square z by dou x square. P, Q, R. Then S. S means this is dou square z by dou x into dou y. It means we have to differentiate that value partially with respect to x and as well as with respect to y. Last value, T value, this is dou square z by dou y square. These are the terminologies you have to remember. Okay, you have to remember when solving the questions. Question kaisa aata, we can immediately start the questions here. How the questions will come in exam. For 2 marks only we are discussing first of all. See how the question will come. From the partial differential equations, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं क्वेश्चन एक, ओके देखिए, ओके फॉर्म FORM form the PDE. It means partial differential equation by eliminating the arbitrary constant, the arbitrary constant. So the question is here, first bit, the question is here, z is equal to ax plus by plus a square plus b square. So what is the question? We have to form a partial differential equation by eliminating these constants. Here the constants are a and b. कभी कभी एग्जाम में आपको यहाँ पे ऐसा ब्रैकेट में मेंशन कर देता कि a और b कांस्टेंट है बोल के, otherwise you have to understand that these are the constants. ठीक है, now we start writing the solution. See here, solution. In the solution, now solution में step number 1 is we have to write whatever it is given z is equal to ax plus by plus a square plus b square. Now take it as equation number 1. Now we have to differentiate this equation number 1 partially with respect to z. Differentiate equation number 1 with respect to x partially, with respect to x partially. So here our answer is partially means this word
this symbol dou by dou x we are using dou for y partial differentiation. Dou by dou x of z is equal to a is a constant. Here x value with respect to x, okay, plus here we don't have any x value, so 0, plus here we don't have 0, here we don't have 0. And now you see dou z by dou x, what we are going to call it as? You see dou z by dou x को क्या बोल रहे हैं अपन? P. So it is P. This is P. P is equal to, this is a into this value is 1, which means that our a value is equal to, what do you say? P. Correct now? P. A value is P. Yes. Similarly, if you differentiate the above equation with respect to another, यहाँ पे अपने को दो टाइप के क्वेश्चन आते. एक रहता, you have to differentiate this equation number 1 for the arbitrary constants. कभी कभी arbitrary constant को eliminate करना रहता, कभी कभी arbitrary function कुछ eliminate करना रहता. दो टाइप के क्वेश्चंस आते 2 मार्क्स के लिए. Yes, sir. To differentiate equation number 1, you need not to worry about it. I will send it this recording in the group so that he can see that recording. Okay, मैं फर्स्ट यूनिट से इसीलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा बेसिक आपको मिल जाएगा इससे. Differentiating equation number 1 with respect to y partially. So how it will be? Can you give me the answer? Dou z by dou y. Dou z by dou y. With respect to y, na? Here in this one we don't have y. We don't have y, so it is 0. So no need to write 0. Plus this is dou by dou y of y. And here we don't have any x or y, means y value or 0. 0 plus 0. No need to write actually, but just to understand. Now we know what is this value. This is called it as q now. Q. Yes, q Yes, is equal to b into this is 1. It means that our value of q is equal to b. So after getting all these values, we have to substitute in our equation number 1. So this equation number 1 reduces to z is equal to a. A answer is what we got it, p. It's a px. P. And b value is qy is equal plus a. A is again, it's a p square plus q square. This is your partial differential equation by eliminating arbitrary constant. And here the arbitrary constants are a and b. Hope you understand. Yes, sir. Okay, yes, थोड़ा sir, सा little extra work करके 3 वेरिएबल का कोएफिशिएंट का क्वेश्चन करेंगे. ठीक है ना? ओके यस सर. ये पूरी यूनिट ये 5 फॉर्मूले बेसिस है, समझे? हाँ जी. P Q R S T. इसके ऊपर ये टर्मिनोलॉजी से यूज करके अपने को इक्वेशंस फ्रेम करना है, इक्वेशंस बना के सब्स्टिट्यूट करना है और काम खत्म करना है. ठीक है? ठीक है सर. तो एक और क्वेश्चन करेंगे. एक और क्वेश्चन देखिए आप. क्वेश्चन नंबर 2 we can take. Question number 2. Directly, a question is like this. X minus a whole square plus y minus b whole. अब लिखने की जरूरत भी नहीं है. देखिए आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाता, आपको इसके रिकॉर्डिंग में मिल जाता. ओके is equals to 25. This is the question number 2. What are the arbitrary constant again? A and b only. X तो constant नहीं होता ना? yes sir.
y भी constant नहीं जी हाँ होता. Z is a function of x and y. Okay, always remember here Z is a function of two variable x and y. So now solution. ओके सर. given समझ में आ रहा ना? बहुत जी स्लो हाँ कर सर. रहा हूँ मैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में यूज करके कर रहा हूँ. given x minus a whole square plus y minus b whole square plus z square is equal to 25. This is taken as equation number 1 here. Now we start our regular work, that is differentiating equation number 1. Equation number 1 with respect to x partially. With respect to x. With respect to x partially. Partially का मीनिंग क्या है भाई? पार्शियली का मीनिंग है अपन सिर्फ और सिर्फ x को ही कर रहे हैं, y को कुछ भी डिस्टर्ब नहीं कर रहे. नहीं कर रहा. सही है ना? जी हाँ सर. With respect to x partially. क्या हुआ? चाय बना बोले क्या? कौन? आप नहीं पी ले सकते, मैं वहां कोई बनाऊं है. So then this implies that x minus a whole square. Here you see x power n फार्मूला अप्लाई करेंगे पहले. थोड़ी सी बेसिक आपको और इसकी थोड़ी एक्स्ट्रा बेसिक यहाँ बता देता हूँ मैं. दिस वन, ये पहले x पावर n का फार्मूला यूज करेंगे. डी बाई डी एक्स ऑफ x पावर n. x पावर n इज इक्वल टू n x पावर n माइनस 1. ओके, ये पूरे को आप x माइनस ए को x अज्यूम करें, n वैल्यू 2 है, तो क्या आंसर आता है इसका? nx minus nx power n minus 1. But n value is 2 here. 2 x value is x minus a here. Power 2 minus 1 is no need to write now. है ना? 2 minus 1 is 1. Yes. So no need to write. Yes sir. ओके, तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन. इसमें x टर्म नहीं है, सो वी नीड नॉट टू राइट दिस वन. प्लस z स्क्वायर का डिफरेंशिएशन फिर से वही z स्क्वायर का 2z, फिर इसका इनर फंक्शन दैट इज डो बाई डो एक्स ऑफ z. समझ में आया ना? y बोले तो कंप्लीट कांस्टेंट हो गया. z क्या है? z फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल से. सही है? x भी है y भी है. जी हाँ, x भी है y भी है. तो z जब भी आएंगे ना, उसको अपन विथ रेस्पेक्ट टू x अलग से करना, विथ रेस्पेक्ट टू y भी करना. अब विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहे तो x ही कर रहे हैं. इज इक्वल टू हियर we don't have anything, so we are going to put it as 0. Correct? Yes Correct, sir. man? This implies that we can divide this whole overall with 2. We are getting x minus a 2, we are dividing, so nothing is left off. If you bring that side, that is minus z into dou z by dou x की वैल्यू ऑलरेडी अपने को कितनी है बोल के मालूम है? p. सही है? Yes sir. जी हाँ. Yes. Equation number 2. Similarly, again, if you differentiate equation number 1, again, if you differentiate equation number 1 with respect to y partially, y partially. with respect to y partially, with respect to y partially, what you are getting? Can you tell me that? 2 times of, अब ये जो x को हो गया था ना, सेम स्टोरी y के साथ होंगी अभी. y minus b to the power of 2 minus 1, I am not writing that, plus z स्क्वायर का with respect to that 2z into dou by dou x of z, और इसको अगर अपन with respect to y करें तो भी ऐसा होता. dz dy y of z. सही करूं कि गलत करूं मैं? सही कर रहे हैं. सही करें ना? So now dividing with 2. This is, if you divide with 2, we are getting y minus b plus, not plus, if you can bring that side, it is becomes what? minus.
If this value will go that side, it is minus z into dou y of z at s cube. This is taken as equation number 3. Okay. Now using equation number 2 and equation number 3 in equation number 1, यहाँ पे लिखेंगे अपन using, या नहीं तो substitute, आपकी मर्जी, आप कैसा भी लिख सकते हैं वर्ड्स में, using 2 and 3, using 2 and 3 in equation number 1. This implies that x minus a की वैल्यू, अच्छा पहले इक्वेशन नंबर 1 तो लिख दीजिए आप, x minus a होल स्क्वायर प्लस y minus b होल स्क्वायर ये x minus a whole square, a y minus b whole square is equal to 25 we are having. Now x minus a की वैल्यू कितनी है बस बोलिए, माइनस zp whole square, ओके, प्लस y minus b माइनस z क्यूब होल स्क्वायर. ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा था जो अभी अपन कर रहे हैं, इज इक्वल टू 25. कौन सा क्वेश्चन नंबर 1 सर? जो एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 1 आता वो इसमें से चाहता फॉर्म नहीं 2 मार्क्स, फॉर्म ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स बोल क्या. अच्छा इसमें अपन एक छोटी सी गलती कर दी है, इसमें क्या करें, जेड स्क्वायर को नहीं लिखे इक्वेशन नंबर 1 में, यहाँ पे नहीं लिखे ना जी हाँ, यस, यहाँ पे भी नहीं लिखे. चलिए प्लस यहाँ पे और क्या आ जाना चाहिए, जेड स्क्वायर भी आना चाहिए. दिस इज इक्वल टू 25, राइट, प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 25. Now square it is minus will become plus, it's a z square t square, plus minus will become plus, this is a z square, it is a q square, plus this is z square is equal to 25. Correct? What we can take common? Yes, we can also take z square as a common. So what is left of t square plus q square plus 1 is equal to what? 25. ये आपका क्लास है ना, क्लास बाद में. Okay ना? So this is the solution of differential equation frame after framing partial order. Okay. जरूरत है तो बताइए. नहीं है सर, इजी है कॉन्सेप्ट. अभी शुरुआत में ही है अभी. हाँ अभी अपन शुरुआत में ही है. अभी चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन, ठीक है ना. होप यू विल अंडरस्टैंड. समझ में आ रहा ना कॉन्सेप्ट? जी हाँ सर. चलिए राइट, एक और क्वेश्चन लेंगे, इससे थोड़ा सा टफ वाला क्वेश्चन है नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास. फिर से अपने को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रेम करना है by eliminating arbitrary constant. Here the question is x minus a whole square plus y minus b whole square, x minus a whole square plus y minus b whole square is equal to z square into cot square of alpha, where alpha is the parameter. Okay, let us find out the solution of this question. Solution. सर ये 2 मार्क्स में आता है बोले. अभी तो अपन 2 मार्क्स में ही है. अभी
बड़े क्वेश्चंस में एंटर नहीं हुए, रीग्रुपिंग के क्वेश्चंस रहते, वो अभी नहीं एंटर हुए। थोड़ा बेसिक मिल गए तो एंटर हो सकते हैं, है ना। जी हाँ। x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर, y माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर इंटू cot स्क्वायर ऑफ अल्फा। दिस इज टेकन एज इक्वेशन नंबर 1। क्या है रेगुलर प्रोसेस, अब तक तो आपको पता चल गया होगा। जी हाँ। डिफरेंशिएटिंग डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन एक्स नंबर 1 पार्शियल with respect to x, with respect to x partially, with respect to x partially. So same story, x square differentiation is 2x, that is 2 into x minus a power 2 minus 1, no need to write, plus since we don't have any x term, so it has become 0. If you don't want to write also, no problem. Z square differentiation is 2z into 2z dou by by dou x of z into this term which is there in the multiplication must be as it is. It is cot square alpha as it is. So this is, you can say 2 and 2 will be cancelling out here. X minus a value is equal to z into, we are using this terminology as p into cot square alpha, cot square alpha. not cos, it is cot, c-o-t cot. This is taken as second equation. Similarly, we have to differentiate equation number 1 X by 2 once y. again. Differentiating, differentiating equation number 1 number with respect to, what is the variable here? y. Y partially, partially, with respect to y partially. He's joined now, maybe. I don't know that uno ye uno ye nahi malum. Now, when differentiating with respect to y, this x terms are will become 0 now. अशरफ है, इसाक तुम कहीं ज्वाइन करें मियाँ, इसाक तुम्हारी क्लास नहीं होती है। It is y minus b, that is again first term will be 0. This is equal to, what is the differentiation of this term? Z square का differentiation 2z z square dy. dou by of d कहीं भी नहीं है बाबा, यहाँ पे d कहीं भी यूज नहीं कर रहे, it's a cot square alpha. Once again this 2 cancelling with this 2, y minus b value is equal to, this is z only, this is, we are assuming it as q because we know the terminologies, that is cot square alpha. Now this is taken as equation number 3. Now using equation number 2 and equation number 3 in equation number 1, using 2 and 3, using 2 and 3, क्या करते रहते आपके दोस्त सब? अशरफ साहब अभी सो रहे हैं क्या? उनके पापा तो बोले ज्वाइन हो जा रहे हैं, बोल दो, मैं इनको कॉल पे बोले भी ना, लिंक भी भेजो बोले, फिर ज्वाइन ना। क्या है, छोड़ दीजिए, जाने। So our equation number 1 is x2 minus a whole square plus y minus b whole square is equal to, here we have z square into cot square of alpha. Now already x minus a की वैल्यू अपने को कितनी आई देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं आप, x minus a की वैल्यू zp into cot square alpha. zp into cot square alpha. Yes, so we'll write it here, zp into cot square alpha, और ये हो गया
होल स्क्वायर इसका, होल स्क्वायर आना कि नहीं आना, है ना? आ रहा है सर। जी हाँ सर। दिस इज ZQ into once again cot square alpha and again whole square is equal to, this is Z square into cot square alpha. Now when squared every term we are getting Z square E square cot power 4 alpha. करेक्ट है क्या? करेक्ट है क्या? यस सर। Yes, very good. Plus it's what? Z square Q square once again cot power 4 alpha 4 is equal to alpha is equals Z to square z। cot square alpha. इन दोनों में फर्स्ट और सेकंड टर्म में Z स्क्वायर कॉमन आता, जी हाँ सर। और z कॉट पावर स्क्वायर 4 अल्फा को भी अपन कॉमन ले सकते हैं। जी हाँ। कॉट पावर अल्फा 4 को भी अल्फा कॉमन, कॉट पावर 4 अल्फा पूरा एक ही टर्म है वो। जी हाँ सर। व्हाट इज लेफ्ट ऑफ हियर? p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस q स्क्वायर q स्क्वायर लेफ्ट ऑफ, ब्रैकेट क्लोज, is इक्वल टू equals to Z स्क्वायर इनटू कॉट स्क्वायर ऑफ अल्फा। सो Z स्क्वायर फ्रॉम हियर, Z स्क्वायर फ्रॉम हियर, कॉट कवर 4 में से एक स्क्वायर वाला टर्म यहाँ से चले जाएगा, तो ये पूरा कॉट स्क्वायर वाला टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। सो वी आर गेटिंग कॉट, एक स्क्वायर कैंसिल हुआ तो एक स्क्वायर बच गया, इंटू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर is equal to 1 here. Multiple terms will go that side. It will comes to the denominator. It's p square plus q square is equal to 1 by cot square alpha. So finally, our answer is what? What is 1 by cot? 1 by cot is tan, no? 1 10 by cot is tan. So it is, the answer is p square plus q square is equal to 1 by cot is equal to tan. It's a tan square alpha. This is the end of this problem. Hope you understand. ओके यस सर। एक सेकंड सर ऊपर करिए। जी ऊपर करो, हाँ कुछ डाउट है? हाँ, थोड़ा नहीं नीचे सर थोड़ा ये आपको लिखने का जरूरत नहीं है बाबा, यस लिखने सर की क्लियर बिल्कुल है जरूरत नहीं है। मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दे रहा हूँ और आपको रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दे रहा हूँ। वो दोनों को सामने रखे, आप पीडीएफ के नोट्स मिल जाते हैं, रिकॉर्डिंग मिल जाती है आपको। बिल्कुल ऑनलाइन क्लास मैं जो पढ़ाता हूँ वो पढ़ाने का थोड़ा मेरा स्टाइल ही चला गया, आपको ना लिखने की जरूरत जी है, हाँ बाद में आप रिकॉर्डिंग भी सुन लीजिए, हर चीज आपको मिल जाती है। सो मूविंग टू वन मोर क्वेश्चन एंड वी हैव टाइम, so let me do one more question, नंबर 4। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस की रिकॉर्डिंग तो आपको शायद कोई भी देता, ऑनलाइन क्लासेस की पीडीएफ आपको बहुत कम लोग देते हैं। जी हाँ सर। Z इज इक्वल टू a x क्यूब प्लस प्लस b y क्यूब। यहाँ पे दिस इज द क्वेश्चन, a x क्यूब प्लस b y क्यूब। ओके, नाउ राइटिंग द सॉल्यूशन। Solution. What's the step number 1? Given Z is equal to a x cube plus b y cube. This is taken as equation number 1. Okay. Now we have to differentiate this equation number 1. क्या था रूल, क्या रहता बताइए? Differentiate with equation number 1 with equation number 1 with respect to x x partially. with respect to x partially. So it is dou by dou x of z, it is equal to, here a is a constant, और आपको यहाँ पे ये भी बताना जरूरी है, ये d by dx of x cube
is equal to 3x square. Okay, derivative of x cube becomes 3x square. तो ये तो कांस्टेंट है, x cube का डिफरेंशिएशन क्या आ जाता, 3x square, correct? Which implies that dou by dou x of z की value we know that it is equal to p. P is equals to 3ax square taken as equation number 2. Equation number 2. Similarly, what we have to do, differentiating equation number 1 with respect to y, with respect to y partially, with respect to y partially. What's the answer? Dou by dou y of z is equal to, first हमने तो y नहीं है, 0 हो जाएगा, b is a constant, so y cube का डिफरेंशिएशन 3y square है ना, x cube का 3x square y है ना, so this value is q is equals to 3y square. This is taken as इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर 2 और 3 को 1 में यूज करेंगे. using 2 and 3 in 1. So our equation number 1 is z is equal to ax cube x cube plus b y cube. This is z is equal to, अच्छा इसमें से अपने को ना a की वैल्यू भी निकालना है यहाँ पे से अपन, आप चाहे तो यहाँ से इसको क्या करिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 नहीं लेके इसमें से अगर अपन a की वैल्यू निकाले सपोज, व्हाट इज दिस a बिकम्स, इसमें से a क्या हो जाता, a की वैल्यू ऊपर से लेना है सर, a की मल्टीपल टर्म्स, एक मिनट जरा काम नहीं कर रहा है, कभी कभी थोड़ा सा सताता है ये अपना पेन व्हाइट बोर्ड का, अभी आएगा. दिस इंप्लाइज दैट दिस मल्टीपल टर्म्स कम्स टू द डिनोमिनेटर, तो जब a की वैल्यू होना है ना तो ये 3x स्क्वायर p के डिनोमिनेटर में चले. ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी वही कहानी होगी, b की वैल्यू क्या बन जाती है यहाँ पे, q by 3 qy square. Right? This is taken as 2, yes, and this is taken as 3. So this a and b we have to use it here. यहाँ पे यूज करेंगे. a value is equal to क्या है वहां पे, p by 3x square into x cube plus b value is q by 3y square into y cube. This z is equal to, ये एक टर्म स्क्वायर कैंसिल हो जाता, we are getting px by 3 plus q, यहाँ से भी एक y क्यूब और ये स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो जाता, ऊपर एक y बच जाता by 3. Now if you want to simplify, multiply 3 on both sides, so we are getting 3 को पूर्ण से मल्टीप्लाई करके finally we write 3z is equal to px plus qy. So this is your answer. Okay, hope you will understand and you will enjoy the class. आज अपन एलिमिनेटरी आर्बिट्ररी कांस्टेंट को कैसा एलिमिनेट करते उसके ऊपर डिस्कशन करें. नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे फंक्शंस को कैसा एलिमिनेट करते. होप यू विल अंडरस्टैंड, राइट? यस सर. ठीक है, सो लेट मी एंड ऑफ दिस मीटिंग. ओके, थैंक यू. Okay sir, just share me the PDF. Yes, everything.
Thank you, sir.